तो देखती आंखों सुनते कानों को हमारी हमारी तरफ तरफ से से सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अल्ताफ और हुसैन। मैं हूं फाखरा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हम हाजिर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, और आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का टाइटल है मिशन इलेक्ट्रिक 2022 ओला इलेक्ट्रिक। सो इसमें हम इलेक्ट्रिक के बारे में, इंडिया बिल्कुल को ऐसे ही जानने कि वाले जैसे हैं। कि ग्रीन एंड क्लीन के एक मुहिम चली हुई है पूरी दुनिया के हाँ। ऊपर, क्योंकि हम डीजल और पेट्रोल से हम इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक दौड़ है जिसके अंदर हर मुल्क अब शामिल हो रहा है, और वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिक कारें, बस इस तरह सब की कुछ इलेक्ट्रिक हो। बिल्कुल। और इंडिया तो बहुत पहले से ये चीज़ ला रहा था। तो इस वीडियो पे हम ये चीज़ देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर आप जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सो अगर हमारी वीडियो भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो जल्दी से देख लेते वीडियो, बक्सा डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट पे से। वीडियो शुरू करते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री। This is ground zero of this revolution. गाड़ी भी। इलेक्ट्रिक बाइक्स। ऐसे ही होता है। ये कितनी वो एक बड़ी बात है कि अपना ही यूनिट है, हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग है। ऑटो है सारी। बहुत कम होता है। कंपनी चेंज कर रही है। हर कलर हर की। कलर की कितने की हाँ, प्यारे कितने सारी खड़ी हैं। ये कलर देखो। लड़कियों की विश होती है ना, मेरी स्कूटी का कलर भी ऐसा हो जैसा मेरा ड्रेस हो। लड़कों जितने कलर फेवरेट नहीं होते, ज़्यादा कलर तो ये उनके लिए डिज़ाइन की जाती है।
कलर बड़े और हैं। हाँ काफी ज्यादा हाँ ये सही ना प्योर के लिए हाँ चार्ज किया फ्यूल इतना कॉस्टली बढ़ जाता है। And this is just the tip of the iceberg. Wow, what an amazing year it has been. You know, exactly 1 year ago, I came to you from here. This is the ground zero of India's EV revolution. We shared our dream to make Indian mobility fully electric and to make India a global EV manufacturing hub. Now, over the last year, we've built this factory. This is the world's largest two-wheeler factory. Wow. And we've built the world's largest. best scooter. We've also taken our scooter to every corner of the country over India's largest sales and service network. We've had many highs and a lot of learnings too along the way. And I want to truly thank all of you for supporting us, believing in us, and for truly getting India's EV revolution kickstarted. We all grew up in an economy and society defined by oil. And this has created the defining challenge for our generation: pollution and climate change. You know, about 40% of the world's pollution is caused by automobiles. But today, we do have a solution. And the solution is to reject petrol and to build a future with electric transport. And not just that, we can make India a global epicenter for this EV revolution and transformation. Let me actually first step back and paint a global picture for you and India's context in it. The world sells 100 million cars a year and 100 million two-wheelers a year. And India only sells 3 million cars a year and 20 million two-wheelers a year. Only about 200 million people in India own their own vehicle. That's less than 15% of us. And as our economy develops, more than half of us will own a vehicle. Half of India will own a vehicle. This would mean India would sell 20 million cars a year and 50 million two-wheelers a year. And with these numbers, India will become 25% of the world's automotive market, up from just 5% today. Now imagine, if all of these vehicles that we're going to sell in the future, if all of them are petrol and ICE driven, just imagine the pollution in our cities. You know, pollution in our cities will triple. We can't live like that. We can't build this as our future. We have to build an EV-driven future. This global EV revolution so far has been limited only to the West and to China. But to truly take the EV revolution to humanity scale, India will have to be the epicenter of change. Now in the West, the average price of an EV car is $70,000. We in India and the rest of the world can't afford such costly vehicles. The average selling price of a car in India is $25,000. Hence, a focus on India means a very different product roadmap, much more relevant to our markets and our consumer needs. And as we build for India, we will also be creating the EV paradigm for the rest of the world. Today, 2/3 of the world's automotive production and manufacturing is in the US, Europe, or China. In this EV future, we can build half of the world's vehicles right here in India. To achieve this dream of being the world's EV hub, we first need to accelerate India's EV revolution. Now, majority of India and the rest of the world uses two-wheelers for transport. And two-wheelers contribute almost half of our transport emissions. And hence, this is the reason why last year, we made a start with the humble two-wheeler. With our launch, the EV penetration in India in two-wheelers is now 5%, up from 1% last year. We launched the S1 Pro last year, the world's best scooter. It has the best design, best technology, and best performance. Now in just 7 months, we've sold more than 70,000 S1 Pros. And we've watched as all of you have fallen in love with our product. You love the MoveOS 2 upgrade. And we've had so much fun seeing you enjoy all the features that MoveOS 2 enabled, like music, navigation, and more. Now we will be taking our software to the next level by releasing MoveOS 3 to everyone this Diwali. MoveOS 3 brings many more exciting features like moods,
digital key sharing, proximity unlock, improved regen, documents on your scooter, and many, many more things. Today, we want to take the electric two-wheeler revolution to a much larger scale and democratize EV scooter ownership in India. We promised this to you last year, and as promised, I'm super excited to present the Ola S1 today. ये देखो S1 As you can see, it's built on the same platform as the S1 Pro, has the same MoveOS software, and the same brilliant, beautiful design. It has a battery capacity of 3 kilowatt-hour, an ARI certified range of 141 kilometers, 128 kilometers in eco mode of true range, 101 kilometers in normal mode, and 90 kilometers in sports mode. And not just range, it has a top speed of 95 kilometers per hour, which is going to make it the fastest scooter in its segment. It has all the amazing features on software like music, navigation, companion app, reverse mode, and everything else that you love in the S1 Pro. Not just that, but it will support all future software upgrades into MoveOS 3 and beyond. You see a beautiful red here, and in addition to this, there are 4 amazing colors: jet black, porcelain white, neo mint, and liquid silver. अमेजिंग कलर है कितने प्यारे हाँ And I know the question on everybody's mind, what's the price? Well, it's going to start at an introductory price of 99,999 rupees. सही You can reserve your S1 at 499 starting today. The introductory price is valid for limited scooters, so make sure you reserve it and buy it before it's sold out. Those who reserve will get early access to buy from September 1st. And purchase opens for all others on September 2nd. And deliveries will start as early as September 7th. We've made financing easier for you with multiple payment options like credit card EMIs and loans. Now you can avail a loan from our 5 finance partners that we've tied up with, or any other offline banking or financial institution of your choice, or even use cash. With EMIs starting at 2,999 rupees and loan processing fee waivers, it couldn't be a better time to buy it. And that's not all. There are many other things that you've all been asking for, and I'm very excited to be launching them today. You can now extend your warranty up to 5 years with our extended warranty product, which will protect your battery, motor, electrical components, and all other standard parts. सही For those who've already purchased the scooter, you can also buy this warranty as an optional add-on in the Ola app. Another question that we've been getting from our customers is about the hypercharger network. Now this Diwali, we will launch more than 100 hyperchargers across the top 50 cities. And beyond that, the network will continue to expand in the future. If the humble two-wheeler was the start of India's EV revolution, the even humbler cell is going to be the heart of India's EV revolution. Now today, the world produces 1,000 gigawatt-hour of cells a year. Majority of this is in China, Europe, and the US. By 2030, the world will need 10,000 gigawatt-hours, and India alone will need 2,000 gigawatt-hour of cell capacity if we have to lead and electrify all transport. Today, guess how much we produce in India? 0. Now, clearly for us to lead the EV world, we need to make our own cells and make them at this mind-boggling scale. We missed the semiconductor, solar, electronic, and other manufacturing revolutions. But everyone around the world is just getting started with cells and EVs. And so if we invest now and at scale, we can do this and we can lead this. Also, this new era of renewable and electric technology is not a commodity like oil. There is no innovation possible to either reduce cost or to improve performance in commodities. And hence, as we all know, petrol prices only go up. Over the past decade, on the other hand, cost of cells have come down from $1,000 a kilowatt hour to $200 a kilowatt hour, while performance and safety has improved 2 to 3 times. And all this is due to the innovations and R&D that companies around the world have done. Yet everyone agrees that they're just scratching the surface of what these EV technologies can and will enable. You know, over the decade, we will see costs come down to $50 per kilowatt hour. Fast charging of batteries increase 3 to 4 times in speed. Range go up, safety improve with solid-state technologies. And also new materials like sodium, sulfur, silicon, etc., which will enable more supply chain security for us in India.
Now, this technology and innovation game is just getting started, and we intend to be a global leader in this over the course of this decade. And that's why we've built this place I'm standing in. We call it the Ola Battery Innovation Center. A world-scale and world-class R&D facility spread across 500,000 square feet. We have the most advanced labs here across cell characterization using machines like scanning electron microscopes, X-ray diffractors, inductively coupled plasma and mass spectroscopes, and many, many more machines. We synthesize our own materials here in our wet and dry labs, where we have the most advanced mixers and furnaces to heat the materials to more than 2000 degrees centigrade, and dry rooms to assemble and test the cells. We also have fireproof safety and performance test labs, where we test all thermal behaviors, which includes overcharge, nail penetration, altitude impact on cells, cycling performance, and also drop and crush tests. And the best highlight of this facility is the amazing 200 people who work here. Some of the smartest people in the world in this domain, most of whom are PhDs in their fields. Now I'm going to show you something very, very special. This is our dry lab in our BIC, and this is the driest, cleanest space here. It's very, very extremely dry, and that's why we have to wear the suit, because otherwise it'll suck moisture out of our skin. And what I'm going to show you now is something extremely close to my heart. This is our first lithium-ion cell. We've made it here, we are very excited about it, and soon we'll be producing it in our gigafactory. And this here is the battery module made from our own cells. Now, we are doing a lot of development and testing, comprehensive testing here in our BIC on these cells, and by end of next year, we'll have them in our products. India is going to be the epicenter of the global EV revolution. And to enable this, we have to build a very different futuristic concept of manufacturing. Global scale, automation, world-class quality, and ultimately benefiting the local communities. Now, a year ago, we shared a vision for the two-wheeler factory that we were going to build. And the two-wheeler future factory, when it's fully complete, will be the world's largest two-wheeler factory. But today, we are expanding that vision into a full EV hub, which at full scale will produce 1 million cars, 10 million two-wheelers, and 100 gigawatt-hour of cells every year. This Ola Future Factory, reimagined Ola Future Factory, is going to be the world's largest EV ecosystem at a single site. Now, if we are manufacturing the cells, we are definitely not stopping at scooters. And you know where I'm going with this. There's something magical about cars. I think you never really forget the emotions of your first date or your first car. Also, cars represent the epitome of industrial and technological capability for any country. The American image of large gas-guzzling pickup trucks. The German image of extremely well-engineered luxury cars. The Italian image of super sports cars, or even the Japanese image of high quality and super efficient cars. Countries and generations often get associated with the cars they build. Now, our own very image in India has evolved from the sturdy ambassador to the efficient and reliable Maruti after economic liberalization. Today, India is a young, energetic, and an extremely ambitious country. But the cars we build now are dull and boring. Indian car makers are conservative, thinking that we only want small cars, or maybe mid-sized cars. Global automakers think that the Indian market is not ready for world-class technology, and hence sell their hand-me-down tech in India. Now, we need to change this. We deserve a car that defines this new India. An India that's fearless,
and believes in writing its own destiny. So what's our car going to be like? You know, our car is going to be one of the fastest cars in India, with 0 to 100 within 4 seconds. It'll have a range of more than 500 kilometers per charge. It'll be the sportiest car ever built in India, with an all-glass roof, designed to deliver a drag coefficient of less than 0.21, best in its class. It'll have our very own Move OS, one of the most advanced computers in a car. Assisted driving capability as good as any other car in the world. Not only keyless, like our scooter, but literally handleless. You know, it'll have the best performance, best design, and the best technology ever built in a car in India. देखोगे क्या? That is so amazing. We are so excited to be building this car. And with these goals, this is the most ambitious car project ever undertaken in India. Built in India, by Indians, but for the entire world. It's been an amazing year, and we have a lot of work to do ahead. This mission of electrifying India and being a global EV hub is possible only because of the freedom we enjoy. To dream big and to build our future the way we want to. To celebrate India's 75th Independence Day and this emotion of freedom, we have something very, very special to end the day with. Jai Hind. आजाद हो तुम, बेखौफ जियो, क्योंकि खौफ से आजाद हो तुम। आवाज उठाओ, क्योंकि खामोशी से आजाद हो तुम। अपने आप के साथ वक्त बिताओ, बीते कल से आजाद हो तुम। रफ्तार महसूस कराओ, हर मंजिल पार कराओ, हर फर्क का जश्न मनाओ। एक नए कल की ओर बढ़ते जाओ, क्योंकि आजाद हो तुम, आजाद हो तुम। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो और काफ़ी डिटेल में वीडियो थी। सब कुछ उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है। और यार, ये वीडियो देख के ना इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। सही है, हाँ। क्योंकि आजकल पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो वैसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है। तो उसकी वजह से यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हैं। तो उनके लिए ये एक ऐसी अच्छी चीज़ जो कम कॉस्ट में पड़ती है और ये एक रेवोल्यूशन है। और बिल्कुल दुनिया चेंज होने लगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटली जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी इसके बाद। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो इंडिया का ये सब, मतलब वो कह रहे थे सेकंड है या फर्स्ट है सबसे बड़ा जो फैक्ट्री है टू व्हीलर की, वो इंडिया के अंदर ये बनी है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कॉस्ट के साथ साथ ही ना इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है ना होता है, इशू होता है इन्वायरमेंट में भी, उसको भी मद्देनजर रखा गया है। क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि इन गाड़ियों की वजह से यानी कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा हुआ था डीजल और पेट्रोल की वजह से। अगर इसको मिलजुल कर लोग अगर इस तरह की न्यू
टेक्नोलॉजी आ जाती है तो लोग यूज़ करने लग जाते हैं, तो काफ़ी हद तक जो हमारा इन्वायरमेंट है बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ही अमेजिंग थी ये 2 व्हीलर जो स्कूटी थी। मतलब यार इतना अमेजिंग उसका जो है और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और दिखने में भी मतलब बहुत सारे कलर भी हैं उसमें अवेलेबल है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव लगती है। बिल्कुल एक फुली अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फुली ऑटो असेंबलिंग हो रही थी। हाँ, हर चीज़ इंडिया के अंदर बन रही है। ऑटो असेंबलिंग है और हर चीज़ उसकी बिल्कुल परफेक्ट। और उसके बाद इसको लॉन्च करने के पहले एक ट्रायल के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ इसके ऊपर एक्सपीरियंस हाँ, किए और बहुत से लोगों और जिन्होंने बाय किए उनके रिव्यू भी बहुत हाँ, ज़्यादा काफ़ी अच्छे थे, अच्छे सेटिस्फाई review थे वो इससे। और इसके साथ साथ यार ये ना मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी मतलब हर चीज़ जो है वो आपके कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रही है, तो इससे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आती है और जो चीज़ की प्राइस होती है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से और भी जो लोग हैं वो उसको बाय कर सकते हैं। और इसमें इंडिया में वैसे भी काफ़ी सारी जो है बाइक्स की और कार्स की कंपनीज है जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते और हैं। एक और बात है कि वैसे भी क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था जब भी मैं कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह की वीडियो देखता हूँ तो सबसे पहले यही माइंड में आता है कि ये आम मतलब मैदानी इलाकों में तो चल सकती है, लेकिन जब पहाड़ी इलाकों में क्योंकि वो ऊपर को हमने जाना होता है तो शायद वहाँ पर ये ना काम सही करे, लेकिन ये वहाँ पर भी बहुत हाँ, अच्छे उन्होंने और चला के परफेक्ट दिखाई अंदाज है। से चलती है। हाँ। और इसकी हर चीज़ को उस मतलब कि जैसे हम एक डीजल या पेट्रोल वाली 2 व्हीलर यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसकी इसी की तरह जैसे जैसे वो काम करती है उससे इसी बिल्कुल तरह काम ऐसे ही करती है है। और उसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं और ये जो है इंडिया को बहुत आगे लेके जाने वाला है ये वाला प्रोजेक्ट। वैसे तो इंडिया पहले बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, लेकिन इससे लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है ना और भी कंट्री जो है और इंडिया से ये लिया ऐसे करेंगे, मतलब काफ़ी बड़ा ये है। जब ये दोनों मुल्क के इंडिपेंडेंस डे मनाए जा रहे थे तो तब ये एक बात फेमस हुई थी कि इंडिया ने अपने इस आज़ादी के दिन पर इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना वो लॉन्च की थी। तो ये मैंने सिर्फ 2-3 अल्फाज में पढ़ी थी, तो वाकई वो हकीकत थी। आज इस वीडियो से पता चला मुझे, बिल्कुल तो ऐसे ही है। मेरे माइंड में फ़ौरन वो अल्फाज आए हाँ। कि वाकई उन्होंने अपने इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा इनकलाब वाली और काफ़ी अच्छी चीज़ अपनी कौम को दी। बिल्कुल ऐसे ही है और इन फ्यूचर तो बहुत ही जो है अच्छा होने वाला है और दूसरे ऐसा होगा कि दूसरे कंट्री भी इंडिया से जो है ये सारी जो है वो किया करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस कंट्री से ये सारी चीज़ें, क्योंकि यार एक हर चीज़ आपके कंट्री के अंदर बन रही है तो इससे आपकी जो कंट्री दूसरे कंट्रियों को जब वो सब बिल्कुल एक देता है। यानी कि एक ऐसा ही हाँ। होता है कि ये आपके लिए एक आपके मुल्क के लिए एसेट का भी काम करती है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे इससे ही है। हमारे मुल्क की जो होती है वो मुल्क की मैशत बेहतर हाँ, होती है, इम्पोर्ट economy, बढ़ती है, हाँ। तो इकॉनमी को एक काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलता हाँ, है, क्योंकि काफ़ी boost ऑलरेडी मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी जो स्ट्रॉन्ग हुई है वो हाँ। इस इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनियों की वजह से हुई है हाँ, इंडिया की। बिल्कुल ऐसे ही और बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी ये और होप सो कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और जब मैं वीडियो देख रहा था ना तो मेरे माइंड में वही एक बात चल रही थी, क्योंकि अभी इंडिया में तो इतने पेट्रोल वगैरह या जो लोग पब्लिक बसों वगैरह में ट्रैवलिंग करते हैं रहते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये इशू है। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक भी है इस तरह सैरो सयाहत का, तो मैं सोचता होता हूँ कि कितनी कॉस्ट पड़ती है हाँ। कि अगर हम एक अपने इस पहाड़ी इलाकों के अंदर सैरो सयाहत के लिए जाएँ तो हमारा जो ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग का जाएँ। कॉस्ट है वो तकरीबन उतनी रहने की खाने पीने की कॉस्ट नहीं होती हाँ, जितनी जितनी वो ट्रैवलिंग की ट्रैवलिंग की आती कॉस्ट है। आ जाती है। हाँ। तो इसको देखकर वो बात ध्यान में आती है, तो ये तो बहुत मतलब एक हाँ। अच्छी चीज़ है, हाँ, क्योंकि क्योंकि कम ना कॉस्ट पे हम इतने खूबसूरत इलाकों को और देखकर आ सकते हैं। क्योंकि हमने ना पिछले साल एक वीडियो बनाई थी उसमें जो है इलेक्ट्रिक कार्स का भी देखा था जो कि इंडिया के अंदर मतलब आने वाली है या आ चुकी होंगी, तो बाइक्स भी और कार्स भी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वाकई में इसमें जो फ्यूल और जो उनका तो खर्चा कम होगा ही होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट इससे जो हो रहा है ख़राब हो रहा है वो भी मतलब नहीं होगा, उससे भी हम
काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच जाएंगे। तो और ये क्योंकि स्कूटी जो ज़्यादातर फीमेल यूज़ करती हैं, तो उसके लिए उन्होंने मेरा ख्याल है कि इसी वजह से ना काफ़ी मल्टी कलर रखे हुए लेकिन हैं, बहुत और प्यारे प्यारे खूबसूरत कलर है। ये वैसे सबके हाँ। लिए है ये वाली, और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, अच्छा है और बहुत डिसेंट से कलर्स भी हैं बिल्कुल इसमें। काफ़ी ज़्यादा हाँ। डिसेंट है, जो भी यानी कि वो टॉप के जो 7-8 कलर होते हैं जो लोगों के फेवरेट होते हैं, वो बिल्कुल। उन्होंने उस हर कलर में उस चीज़ को डिज़ाइन कर दिया। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।